तो अगर इक्वेशन टाइप सम आ गया तो इक्वेशन को देखते ही डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी समझ में आ जाएगा और इनटू पी बाय क्यू करेंगे तो इन दैट केस विल गेट द आंसर। ठीक है, तो अगर इक्वेशन टाइप सम नहीं आया, वैसा सम आया ओके कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, नंबर सुनना, व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गोज अप from 50 to 60, goes up from 50 to 60, the demand falls from 200 to 180. Demand falls from 200 to 180. So price has gone up 50 to 60. So delta P is what? 10. Quantity has gone down from 200 to 180. That is what? 20. Minus को ध्यान नहीं दे रहे, 20 तो 20 by 10 आया इधर. Into price by quantity. Into price by quantity में the CFA Institute uses the ARC method. What method? ARC method. मतलब price would be average, quantity would be average. तो price 50 से 60 गया तो average क्या हो गया? 55. Quantity 200 से 180 गया, क्या हो गया? 190. तो अपना जो आंसर था 20 by 10 into what? 55 by 190. That's the answer. तो sums wise एकदम catch है. अगर sums आता है तो दो ही टाइप का sum हुआ. एक हुआ equation type sum और एक हुआ न्यूमेरिकल टाइप सम। इक्वेशन टाइप सम में इक्वेशन को देख के आपको डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी समझ में आ जाएगा, ठीक है, और प्राइस और क्वांटिटी आप पुट कर दोगे। और न्यूमेरिकल टाइप सम में एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी पुट कर दो, ठीक है। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू, ठीक है। तो देखना नीचे नेक्स्ट लाइन। owing to the law of demand, owing to the law of demand, owing to the law of demand, ED would always be negative. Owing to the law of demand, ED would always be negative. Owing to the law of demand, comma, ED would always be negative. ED would always be negative. Full stop. Hence, the minus sign is dropped. Hence, the minus sign is dropped. And ED is spoken in absolute sense. Hence, the minus sign is dropped and ED is spoken in absolute sense. Hence the minus sign is dropped and ED is spoken in absolute sense. Spoken in absolute sense. Full stop. Para change. Example. First example. The demand function for a commodity is given by. The demand function for a commodity is given by. Next slide. Price equal to 60 minus 2Q. Price equal to 60 minus 2Q. Find out ED. Find out ED at a price of. Find out ED at a price of 10. At a price of 10. Okay, find out the answer. Find out ED at a price of 10. Compute karo. कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है मेरे ख्याल से। इक्वेशन को देखते ही चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी -2 दिख रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी इज -2, तो जाहिर है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस क्या होगा? -1/2। चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी इज -2। अपने को तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी चाहिए, तो क्या आएगा? -1/2 ना। ओके, इक्वेशन को देख के या फिर कोई टाइम स्पेंड करे तो फालतू में उल्टा भी कर सकता है इक्वेशन को। 2q इज इक्वल टू दिस, बट दैट वुड बी अ प्योर टाइम वेस्टेज आई बिलीव। आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राइस 2 के रेट से चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी हाफ के रेट से चेंज हो रहा है। दैट वुड बी मच मोर स्पॉन्टेनियस इन एमसीक्यू एग्जाम। वैसे यू कैन वेस्ट योर टाइम इनटू फाइंडिंग आउट 2q इक्वल टू 60 माइनस p, सो q इज इक्वल टू 30 माइनस हाफ p। आ रहा है ना, q इज इक्वल टू 30 माइनस हाफ p, तो वहां से पता चल जा रहा है हाफ का रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हुआ? इंप्लाइज डेल्टा p
by delta Q is equal to -2. Therefore, delta Q by delta P is equal to -half. ठीक है तो? और इनटू क्या करना है? P by Q. इनटू क्या करना है? प्राइस बाय क्वांटिटी. तो प्राइस बाय क्वांटिटी में प्राइस क्या लिखा है? 10. तो 10 is equal to 60 minus 2Q. तो क्वांटिटी क्या आ रहा है? 25. 10 is equal to 60 minus 2Q. तो क्वांटिटी क्या आ रहा है? 25. तो क्वांटिटी 25 आ रहा है, तो सब चीज अवेलेबल है आपके पास. ED is equal to delta Q by delta P into P by Q into P by Q. तो that is equal to delta Q क्या था? delta Q by delta P क्या था? -half. Into price by quantity. Price is what? Quantity is 25. So answer is -10 by 50. That is, the answer is what? -0.2. Which means what? Implies 0.2. 0.2 का interpretation बोलने वाइज interpretation क्या हुआ? If price changes by 1%, demand is expected to change by 0.2%. Okay, it is elastic or inelastic. जो उसको टेक्निकली पता भी नहीं है वो भी फील कर सकता है. इलास्टिक मतलब होता है ज्यादा रिस्पॉन्सिव, इनइलास्टिक मतलब लेस रिस्पॉन्सिव. तो इट इज मोर रिस्पॉन्सिव और लेस रिस्पॉन्सिव. लेस रिस्पॉन्सिव, तो इट इज व्हाट? इनइलास्टिक. ओके, इनइलास्टिक. डिमांड जो है इनइलास्टिक है. प्राइस के 1% चेंज होने से डिमांड केवल 0.2% चेंज होगा. तो इट इज व्हाट? इनइलास्टिक. तो इसका मतलब आप क्या एडवाइस करोगे रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से? जो सेलर ऑफ द प्रोडक्ट है, कंपनी उसको प्राइस बढ़ा देना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए. प्राइस बढ़ा देगा, कंज्यूमर कुछ कर ही नहीं पाएगा. प्राइस अगर इंक्रीज किया तो डिमांड विल जस्ट फॉल बाय 0.2%. तो ऑन द होल रेवेन्यू विल राइज ना. ओके, द डिमांड इज व्हाट? इनइलास्टिक. इट इज लेस इलास्टिक. ओके, इनइलास्टिक. नेक्स्ट एग्जांपल न्यूमेरिकल वाला. नेक्स्ट एग्जांपल है if the increase in price of a product, if the increase in the price of a product from, if the increase in price of a product from 40 to 50, 40 to 50 leads to a fall in demand, leads to a fall in demand from 200 to 150, leads to a fall in demand from 200 to 150, from 200 to 150. Find out ED. ठीक है, कंप्यूटर. क्या है? 9/7. Delta Q by delta P into P by Q. So quantity has come down by how many units? 50 units. Price has gone up by what? 10 rupees. Average price is what? 45. Average quantity is what? 175. Okay. So answer is coming to what? 9/7. Is equal to 9/7. So 9/7 is what? 1.29. 1.29. 9/7 is 1.29. इलास्टिक और इनइलास्टिक? इलास्टिक. 1 से ऊपर है इलास्टिक. ठीक है. ओके, 1.29 is elastic. 1.29. खैर दिस कैलकुलेशन वाला पार्ट इज हाईली मैकेनिकल. ठीक है. तो इफ एट ऑल इट कम्स, इट्स अ ग्रेट गिफ्ट, बट नॉर्मली कम थी फ्रीक्वेंसी होती है. ओके, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा. तो 1.29 इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो क्वेश्चंस वाइज दो ही तरह का सम बन पाएगा. सम्स एक तो हो गया इक्वेशन का और एक हो गया फिगर्स का. फिगर्स में आर्क मेथड यूज करना है. ओके, एवरेज प्राइस, एवरेज क्वांटिटी, आर्क मेथड यूज होगा. क्योंकि 45 फुट की 175 फुट की, वी कॉल इट द आर्क मेथड, ARC. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4. On a straight line demand curve. Point number 4, on a straight line demand curve. On a straight line demand curve, dash next line, ED is equal to
lower segment by upper segment. ED is equal to lower segment divided by upper segment. Lower segment divided by upper segment. Lower segment by upper segment. Okay, draw the curve. So x axis पे quantity, y axis पे price. This is the demand curve. On the demand curve, at the midpoint, elasticity is equal to what? 1. One is called unitary elastic. One is called unitary elastic. Unitary elastic. ठीक है? इस range में elasticity is what? More than 1 or less than 1? Greater than 1, because the lower segment is bigger, the upper segment is smaller. ED greater than 1. Greater than 1 क्या हो गया? Elastic. Right at the topmost point, this point पे ED is equal to what? Infinity. ED is equal to infinity because there is no upper segment left. Now lower segment by 0 is equal to what? Infinity. Infinity माने perfectly elastic. Infinity माने perfectly elastic. Perfectly elastic. ठीक है? In this region over here, ED is what? Less than 1. Less than 1 माने क्या हो गया? Inelastic. Less than 1 means inelastic. Okay? At this point, lowest point पे ED is equal to what? 0. 0 माने perfectly inelastic. Perfectly inelastic. Perfectly inelastic. So is it true to say that ED is different at different points on a demand curve? ED is different at different points on a demand curve. Is it true to say that ED is higher at higher prices on a demand curve? Is it true to say that ED is higher at higher prices on a demand curve? Yes, you can see it. Higher prices, ये तो higher prices, उस पे ED is what? High. Lower prices पे ED is what? Low. Anyways, जो formula है delta Q by delta P into P by Q into P by Q. तो higher prices पे lower quantity पे तो ED क्या आएगा? High. और lower prices पे higher quantity पे ED क्या आएगा? Low. ठीक है? The fact that ED is different at different points on a demand curve is challenged in those circumstances where the demand curve is horizontal or it is vertical or it is more or less a rectangular hyperbola. Okay? Those are the 3 exceptions where ED is the same at all points on a demand curve. Okay? Just write down that. Right now. So, ED is different at different points on a demand curve. So ED is different at different points on a demand curve. ED is different at different points on a demand curve. Different points on a demand curve subject to the following exceptions. Subject to the following exceptions. Subject to the following exceptions. Dash. Exception number 1. Perfect competition. Perfect competition. Perfect competition may, as one would recall, everybody has a background in this regard, that there are large number of buyers and large number of sellers selling identical product at the same price with free entry and exit in the long run. Large number of buyers, large number of sellers selling homogeneous product. So in that case, each particular seller is important or not important? Not important. It is the industry, all the sellers and buyers who decide upon the price. Firms are price takers, industry is the price maker. Industry price तय करता है, अपने सबको मानना पड़ता है, because हम लोग सेम चीज तो बेच रहे हैं और सबको सब कुछ पता है. जरा सा भी ऊपर दाम चार्ज करेंगे, कोई जरा सा भी बाई नहीं करेगा. मतलब दाम ऊपर चार्ज करने से डिमांड कम नहीं होगा, वैनिश होगा. तो इसका मतलब the demand curve is what? Horizontal. We have to sell at the price set by the industry. Perfect competition. Firms are what? Price takers. Price cannot change. Therefore, price cannot change. तो ED क्या हो गया? Infinity. Because ED होता क्या है? Percentage change in quantity divided by percentage change in price. If price cannot change, denominator is 0. ED is what? Infinity. So perfect competition में लिख दो. Firms are price takers. Firms are price takers. Firms are price takers and industry is the price maker.
Industry is the price maker. Firms are price takers and industry is the price maker. Which means x axis पे quantity, x axis पे quantity, y axis पे यहाँ पे चल रहा है industry. This is the industry. Industry means one buyer or all buyers? All buyers. One seller or all sellers? All sellers. और ये चल रहा है firm. Okay, industry and firm. Y axis पे चल रहा है अपना price. So this is the aggregate demand curve, AD curve. Aggregate demand curve. Aggregate demand curve. इस level पे you shouldn't be fictional. You should speak about it. मतलब ये लोग सारे अगर buyers हैं, तो in that case 10 रुपया पे ये कितना buy करेगा? ये बोला 50 units. He said 70 units. दोनों मिलाए कितना units? 120. He said 80 units. तीनों मिलाए कितना units? 200 units. सबको पूछ लिया. तो 10 रुपया पे इन सब का डिमांड था मिला के 1000 units. 11 पे पूछे. किस पे पूछे? 11 पे. तो ये ज्यादा बोलेगा कम बोलेगा इस बार? कम. तो ये बोला 48 units. ये बोला 55 units. सब कमती बोले. टोटल किए तो 10 पे कितना आ रहा था? 1000. 11 पे आया 980. 12 पे पूछे, 13 पे पूछे, 14 पे पूछे. वो जो पूछे वो प्लॉट कर दिए. ठीक है ना? I plotted that 10 पे इतना, 11 पे इतना, 12 पे इतना, 13 पे इतना. The aggregate demand curve is not a big thing. It's just a sum total of the demand by everybody in the market. Okay? वैसे ही this is the aggregate supply curve. Aggregate supply curve. Although we have not talked about supply. Supply का बोलने का मतलब तुम लोग अगर suppliers हो तो तुम लोग से पूछे बता तुम 10 पे कितना सप्लाई करेगा? जाहिर है कम थी. उससे पूछे, सबका ऐड कर दिए. 11